Oh, Bhagavatam. Hey, Govinda Maharaja, Navalita, Natara. Hey, Govinda Maharaja, Navalita, Natara. Singarananda Bhupara. Hey, Singarananda Bhupara. Yamuna Tattara Gopira Kanara. Yamuna Tattara Gopira Kanara. Rakha Tikyati Pamoya. Rakha Tikyati Pamoya. Hey! Shriya Bhagavatam Vindavana Natavana. Shriya Bhagavatam Vindavana Natavana. Shriya Bhagavatam Vindavana Natavana. Shriya Bhagavatam Vindavana Natavana. Bhakti Vinodaya. Srila Bhakti Vinodaya. Jai Atomati Nandan Brajavaranaga Gokura Oh, Amavarina, Namiyavi, Nata, Govindam Madhava, Namalika, Nata, Namo Tatata, Gopi Manohara, Jiravala, Vindavana, Natavara, Hari Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Ram, Hari Ram, Hari Ram, Hari Ram. Hare. Yes, I go Hari Ram, Hari Ram, Hari Ram, Hari Ram. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram.
Haribo, 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 Haribo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Yasomati Nandana Brajabaranagara Gokula Ranjana. Kana, Krishna. No introduction. Introduction was done yesterday. 2 seconds. That's Hare Krishna. Hare Krishna. We are very fortunate to have with us very dear disciple, son of Ujjain Krishna Prabhupada, His Holiness Chandramauli Swami Maharaja. Maharaj appeared in 1947 in New Jersey, USA, and in 1971 he came in contact with Iskcon. In 1973, Maharaj started serving, and soon thereafter he served in very austere conditions in New Vrindavan community at West Virginia, as we have heard from Guru Swami Maharaj also. He received initiation from Srila Prabhupada, and in 1986 Maharaj received sannyas initiation, and he is preaching in different parts of USA. Especially as we know, this material world is a prison. So in the prison, there is a prison where prisoners live. So Maharaj is especially merciful, and he is involved in IP and Iskcon prison ministry. And since last more than 30 years, he is going to them and trying to reach them, giving them Srila Prabhupada books. And in this way, he has saved the lives of millions of prisoners. Currently, Maharaj is traveling in USA, Europe, India, and guiding. And especially, we are very fortunate that Maharaj is coming here regularly, and he has very intimate association with His Holiness Bhakti Charu Maharaj, as you can see in the pictures on the projector. And Maharaj, there are some pictures of Rath Yatra and taking prasada together. So we are very fortunate to have His Holiness Chandramauli Swami Maharaj here with us. Maharaj is inundating everyone in the ocean of holy name. So are you all ready? Haribol! Not take much time. We will welcome Maharaj, express our gratitude to him by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki, His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Canto 9, Chapter 19, King Ayati achieves liberation, verses 27 and 28. स्कंद 9 अध्याय 19 राजा ययाति को मुक्ति लाभ श्लोक 27-28 Sasanivasam suridam prapayam ivagachchatam Vigayesvara tantranam Maya virachitam prabho Sasanivasam suridam Prapayam ivagachchatam
Vigyayesvara tantranam Maya virachitam prabho Sasanivasam suridham Papayamiva gacchatam Vigyayesvara tantranam Maya virachitam prabho Sasanivasam Suridam Prabhayami Gacchatam Vidyayeshwara Tantranam Maya Virachitam 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 Prabhu. Ladies, Sasanivasam Suridam Prabhayami Gacchatam Vidyayeshwara Tantranam Maya Virachitam Sasanivasam Suridam Prabhayami Gacchatam Vidyayeshwara Tantranam Maya Virachitam Sasanivasam Suridam Prabhayami Gacchatam Vidyayeshwara Tantranam Maya Virachitam. anyone else? Sa Devayani Sanivasam, living in the association, Suridam, of friends and relatives, Prapayam, in a place where water is supplied, Eva, like Gachyatam, of tourists on a program for going from one place to another. Vigyaya, understanding, Ishvara Tantranam, under the influence of the rigid laws of nature. Maya Virachitam, the laws enforced by Maya, the illusionary energy. Prabhu, of the Supreme Personality of Godhead. Sarvatra, in this material world. Sangham, association. Usritya, giving up. Swapna apamyeya, by the analogy of a dream. Bhargavi, Devyani, the daughter of Sukacharya, Krishna, unto Lord Krishna, Mana, complete attention, Samanivesya, fixing, Yadunat, gave up, Lingam, the gross and subtle bodies, Atmanaha, of the soul. Translation.
Thereafter, Devayani, the daughter of Sukaracharya, understood that materialistic association of husband, friends, and relatives is like the association in a hotel full of tourists. The relationship of society, friendship, and love are created by Maya of the Supreme Personality of Godhead, exactly as in a dream. But by the grace of Krishna, Devayani gave up her imaginary position in the material world. Completely fixing her mind upon Krishna, she achieved liberation from the gross and subtle bodies. Srila Prabhupada, you want to do translation? Yes. Yeah, go ahead. अनुवाद तत्पश्चात शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी समझ गई कि पति मित्रों तथा संबंधियों का सांसारिक साथ प्याऊ में यात्रियों की संगति के समान है। भगवान की माया से समाज के संबंध मित्रता तथा प्रेम ठीक स्वप्न की ही भांति उत्पन्न होते हैं। कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी ने भौतिक जगत की अपनी काल्पनिक स्थिति छोड़ दी। उसने अपने मन को पूरी तरह कृष्ण में स्थिर कर दिया और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से मोक्ष प्राप्त कर लिया। One purport, one should be convinced that he is spirit, soul, part and parcel of the Supreme Brahman, Krishna. But somehow or other, one has become entrapped by the material coverings of the gross and subtle bodies consisting of earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. One should know that the association of society, friendship, love, nationalism, religion, and so on are nothing but creations of Maya. One's only business is to become Krishna conscious and render service unto Krishna as extensively as possible for a living being. In this way, one is liberated from material bondage. By the grace of Krishna, Devayani attained this state through the instructions of her husband. तात्पर्य मनुष्य को आश्वस्त होना चाहिए कि वह परब्रह्म कृष्ण का अंश दिव्य आत्मा है, किंतु न जाने किस तरह वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, पृथ्वी तथा अंधकार से रचित स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के भौतिक आवरण में बंदी हो गया है। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि समाज का साथ, मित्रता, प्रेम, राष्ट्रीयता, धर्म आदि माया की सृष्टियां हैं। मनुष्य का एकमात्र व्यापार कृष्ण भक्त बनना और यथासंभव कृष्ण की अधिक अधिक सेवा करना है। इस तरह मनुष्य भवबंधन से छूटता है। कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी को यह स्थिति अपने पति के उपदेशों से प्राप्त हुई। Om Gyantimidandasya Gyanajana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasnaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyavadi Pasyatya De Satarine Panchakopa Taruvishya Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Srila Bhakti Vinod Thakur sings Maya Ravase Kacho Bese Kacho Ha Bubu Duvai Chief Krishna Das E Vishwas E Kolida Adukanai. He's explaining that this is the nature of the material world. And it's mentioned here. Oh, I'm sorry. श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जस माया वसे हर्ष वैसे हर्षनापु भाई जीव कृष्णदास एक विश्वास अगले दौर दुख नहीं। बताते हैं कि भौतिक जगत का स्वभाव ही इस तरह है। It's mentioned here also in the same principle that in this material world, Karanam Guna Sangaso Sarasat Joni Janmasu,
The living entity is never in one place, always moving from place to place, life after life after life. यहाँ बताया है कि इस भौतिक जगत का स्वभाव इस तरह है कि कारण गुण संभव सतत योगी जन्मसु जीव इस संसार में एक जगह नहीं रह पाता है, निरंतर अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहा है, अलग अलग जन्मों में। Due to the desire of the living entity, he's placed in a position to fulfill that desire, even in the lowest species of life, or in the middle planetary system, such as the Earth planet, or in the realm of the Devas, the realm of Svargaloka. जीव अपनी इच्छाओं के कारण इस जगत में है और उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग शरीर प्रदान किए जाते हैं, कभी पृथ्वी लोक में, कभी विभिन्न लोकों में और कभी देवताओं के लोकों में। So, just like Bhaktivinoda Thakur explains, just like on an ocean, there are sometimes straws floating in the ocean waves. श्लोक ठाकुर समझाते हैं कि इस प्रकार एक समुद्र में कभी-कभी तिनके जो हैं लहर के प्रभाव से एक साथ आगे गिर जाते हैं। And these straws are being tossed from one place to another by the churning of the waves. और फिर दूसरी जब लहरों का वेग आता है तो सारे तिनके अलग-अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। And sometimes two straws come together by the arrangement of the ocean, and a few minutes later they're separated by that same ocean. कभी समुद्र की लहरों के प्रभाव से दो तिनके एक साथ में आते हैं और कुछ ही मिनटों बाद उन लहरों के प्रभाव से अलग दिशाओं में बह जाते हैं। So by the time factor, the conditioned soul is thrown into a material situation. जो इस प्रकार काल के प्रभाव से जीव इस जगत में अलग-अलग भौतिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। We get a set of relatives, friends, and others. हमें कुछ रिश्तेदार, मित्र इत्यादि अलग जन्म में प्राप्त होते हैं। And the conditioned soul is thinking, this is my life. बंदर जी सोचता है कि यही है मेरा जीवन। These are my relatives. These are my support for all my desires in this world. ये मेरे रिश्तेदार हैं और इस संसार में जो मेरी इच्छाएं हैं उनके लिए यही सहायक हैं। But here, who are these friends, relatives, and other people we meet? Just other souls who are also being thrown by the waves of the material energy. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रिश्तेदार मित्र समाज के हैं, ये भी वही बद्ध जीव हैं जो कि इस भौतिक जगत में अभी कष्ट भोग रहे हैं। Because we have similar desires, we're put together by a certain set of living entities. क्योंकि हम जीवों की एक जैसी इच्छाएं हैं, इसलिए उस जीवों को एक साथ एक जगह पे रख दिया जाता है। Or even sometimes, one who is my friend in the last life becomes my enemy in the next life. और कभी-कभी जो पिछले जन्म में मेरा मित्र था, वो इस जन्म में मेरा शत्रु बन के जन्म लेता है। One becomes my enemy in a previous life, now is my friend in this life. पिछले जन्म में जो मेरा शत्रु था, वो इस जन्म में मेरा मित्र की तरह कार्य कर रहा है। Or one is my enemy in my last life becomes my real enemy in this life. और जो पिछले जन्म में मेरा शत्रु था, वो इस जन्म में और ज़्यादा शत्रुता कर रहा है। So we call those relatives. हम उन सबको कहते हैं रिश्तेदार। When I speak to devotees about their struggles in Krishna consciousness, their biggest problem is their relatives. जब मैं भक्तों से कृष्ण भावनामृत में उनके संघर्ष के बारे में बातचीत करता हूँ, तो बताते हैं सबसे बड़ी समस्या हमारे रिश्तेदार हैं। My mother doesn't want me to be a Hare Krishna. मेरी माँ नहीं चाहती है कि मैं हरे कृष्ण बनूं। My father's an atheist. पिताजी नास्तिक हैं। There's so much trouble, difficulties coming not from outside, but from the closest people in our life. बहुत सारी समस्याएं विपदाएं आती हैं, बाहर से नहीं बल्कि जो लोग हमारे हमसे करीब हैं उन्हीं से। You want to be a brahmachari? Oh, that's a problem. No wife. The relatives, the parents think, where's the grandchildren? यदि आप ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, तो भी एक समस्या आती है।
Yeah, my mother used to become upset with me. No grandchildren. हाँ, तो महाराज बता रहे हैं कि उनकी माँ उनसे नाराज होती थी कि पोते पोती नहीं है हमारे। Krishna's better. Fortunately, I have a sister who got married, so my mother was a little pacified. मेरी बहन थी तो सौभाग्य से उसकी शादी हो गई तो मेरी माँ थोड़ी शांत हो गई। And that's the way in the material world. You want to be Krishna consciousness, so many restrictions, so many blocks. तो ये भौतिक जगत इस तरह है, आप कृष्ण भावना और बनना चाहते हैं तो बहुत सारे बाधाएं आएंगी, बहुत सारे विकर्षण आएंगी। There was one brahmachari, he joined a temple in Chaupati many years ago. एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने इस्कॉन चौपाटी मुंबई में बहुत वर्षों पहले मंदिर ज्वाइन किया। His mother was really upset. उनकी माँ बहुत ही नाराज थी। So after being there for some time, the mother came to the temple. तो वहाँ वो कुछ समय थे और उनकी माँ एक दिन मंदिर में आई। She threatened her son, "Come back or I'll commit suicide." बेटे को धमकी दी, आओ वापस चलो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। And everybody, she was making a big show in front of all the brahmacharis. तो सारे ब्रह्मचारियों के सामने माता जी इस तरह से चिल्ला रही थी, बोल रही थी That if you don't come back, I'll take my finger and I'll push it in this light socket and I'll commit suicide. यदि तुम वापस नहीं चलोगे तो मैं इस मेरी अंगुली को बिजली के सॉकेट में डाल दूंगी, नहीं आत्महत्या कर लूंगी। So everybody got worried. तो सभी चिंतित हो गए। So the boy went back home. तो ब्रह्मचारी वापस घर चला गया। But after staying home for a little while, he came back to the ashram again. लेकिन घर पे कुछ समय रहने के बाद फिर से वो आश्रम में लौटा। And then after some time, the mother came again. फिर कुछ समय बाद माँ भी फिर से आ गई। Part 2 of the drama. ड्रामा पार्ट 2। So again, she made her threats. तो फिर से हमने वैसा ही किया। But nobody listened this time. लेकिन किसी ने इस बार माँ की बात नहीं सुनी। She was making a show. क्योंकि सबको लगा कि ये तो ऐसे ही बोल रही है। And so there's a saying that goes on in both in Christianity and also in our tradition. The most difficult place to practice spiritual life is in your own hometown. तो ऐसा कहावत है क्रिश्चियनिटी में भी और हमारे समाज में भी कि सबसे कठिन जगह जो है वो भक्ति का अभ्यास करने की वो है आपका खुद का घर। Yeah, because everyone sees you the way that you were when you were growing up, and nothing changes for them. आपका घर या फिर जहाँ आप पले बड़े हैं, क्योंकि सभी आपको देखते हैं कि ये तो हमारे सामने खेला बड़ा है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं अनुभव कर पाते हैं। No, Bhakti Vinod Thakur explains. What is that verse? Can't think of the verse. Manaso deho geho yokichumur arpi lutu abade nanda kishwar. And my home, my wife, my relative, everything, it's yours, Krishna Nanda Kishore. Everything belongs to you. श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने गान में कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा मन, मेरा घर, मेरा जो कुछ भी संपत्ति है वो सभी आपका है, सब आपकी संपत्ति है। So everything in this world is simply the dance of the material energy. तो इस जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वो भौतिक शक्ति का एक प्राकट्य है। And it's compared to a jailhouse. इसकी तुलना की गई है एक जेल से। Jail. We were talking about prison preaching in jail. हम बात कर रहे थे कि जेल में महाराज प्रचार करते हैं। Now the scriptures that compared this place, it's called Martya Loka, the place of death. तो शास्त्रों में बताया है कि ये भौतिक जगत जो है मर्त्य लोक है, मृत्यु का संसार।
And it says, everyone in this place is locked up by chains. और इस जगत में जो कोई भी है वो जंजीरों से बंधा हुआ है. Just like in some prisons when they have very violent prisoners inside, they don't give them any freedom in the jail. They lock them with chains. जैसे किसी जेल में हम देखते हैं बहुत ही खूंखार जो कैदी होते हैं उन्हें बिल्कुल आज़ादी नहीं दी जाती, उन्हें जंजीरों से लाद के अलग ही रख दिया जाता है. And so these chains restrict everything. और इन जंजीरों से उनका पूरी तरह उनको सीमित कर दिया जाता है. So this world is also has its chains. तो इस जगत में भी हम जंजीरों से बंधे हुए हैं. The chains of sex life. वो जो हैं वो हथकड़ियां हैं यौन जीवन की हथकड़ियां. There are iron chains, there are silver chains, and there are golden chains. लोहे की हथकड़ियां हैं, चांदी की भी हैं और सोने की भी हैं. So one might think, I have golden chains and you have iron chains, I'm better than you. कोई सोच सकता है कि मैं सोने की हथकड़ियां हैं तो मैं जिसके पास चांदी की हैं उनसे अच्छा हूं. Somebody is thinking their sex life is very nice. कोई सोच रहा है कि जो मेरा यौन जीवन है बहुत ही अच्छा है. And someone is thinking, I'm struggling. कोई सोच रहा है मैं संघर्ष कर रहा हूं. And others think I'm suffering. कोई सोच रहा है कि मैं तो कष्ट ही भोग रहा हूं. King Yayati, he thought sex life was everything. राजा ययाति तो सोच रहे थे कि यौन जीवन सबसे कुछ है. He made a big program just to try to enjoy in that way. उन्होंने पूरा कार्यक्रम बनाया था कि इसका मैं आनंद लेने का प्रयास करता रहूं. But he came to his senses after some time. लेकिन कुछ समय बाद वो वापस उनका होश ठिकाने आ गया. Because in the material world, nothing can give satisfaction. क्योंकि इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु आपको संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती. In the material world, the more you try to enjoy, the more you become dissatisfied. इस भौतिक जगत में जितना भोग करने का प्रयास करते हैं उतना ही आप असंतुष्ट होते चले जाते हैं. That is the nature of the material energy. भौतिक शक्ति का स्वभाव ही ऐसा है. There's some temporary relief from suffering when one engages in some kind of sense enjoyment. जब हम किस तरह के इंद्रिय भोग में लिप्त होते हैं तो क्षणिक अवस्था के लिए हमें दुख से निवृत्ति मिलती है. But that temporary relief is what it is. It's temporary. लेकिन ये जो क्षणिक जो राहत मिल रही है वो तो क्षणिक ही है ना. And then the pain comes back, but it comes back even stronger. और उसके बाद दर्द वापस आ जाता है लेकिन इस बार वो और तीव्र गति से आता है. Srila Prabhupada gives the example. If you just like you have a mosquito bite. श्रीला वो उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आपको एक जगह मच्छर ने काट लिया. So there's some pain, there's some itching there. तो वहाँ पे दर्द होता है, खुजली भी होती है. So you want to relieve the pain, so you scratch it. तो आप सोचते हो कि दर्द से मुक्ति मिले इसलिए आप उसको खुजलाते हो. So while you're scratching it, it seems to be getting better. जब ऐसा करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ आप अच्छा लग रहा है. As soon as you stop, it comes back even worse. लेकिन जब आप जलाना बंद करते हैं तो फिर दर्द और तकलीफ और ज़्यादा हो जाती है. So sex life is like that. तो यौन जीवन उसी प्रकार है. It seems like you're relieving the pain of the feelings of lusty desires. आप सोचते हो कि आप जो काम इच्छाएं हैं उनका जो वेग है उनके कष्ट से आपको मुक्ति मिल रही है. But after some time, it comes back even stronger. The same desires are stronger. लेकिन कुछ देर बाद वही काम वासना और तीव्र वेग से आती है. But if you don't scratch it, लेकिन यदि आप उसे खुजलाते नहीं, you simply tolerate it, आप उस वेग को सहन करते हैं, after some time, it goes away. तो फिर कुछ समय बाद वो वेग अपने आप चला जाता है. That's true with all material desires, ये तथ्य सारी भौतिक इच्छाओं पे लागू होता है, especially sex life. विशेष रूप से और जीवन में. Just forget about it. भूल जाइए उसे. Maya will remind you, माया आपको याद दिलाती रहेगी. oh, you haven't enjoyed like you haven't used to enjoy in a long time. I'm still here to remind you what you're supposed to do. तो माया हमें याद दिलाती रहेगी, अरे आपको भोग करना है, आप पहले कितना अच्छे से भोग करते थे, अब मैं यहाँ पे फिर से हूँ आपको याद दिलाने के लिए कि आप आनंद लीजिए. Hello, who's there?
It's me, Maya. इस तरह हमारे दरवाजे पे आवाज आएगी, कौन है? मैं हूँ, माया। Oh, Maya, I'm busy today. Come back tomorrow. लेकिन हमें कहना है, मैं आज व्यस्त हूँ, आप कल आइए। I'll be back. ठीक है, मैं आती हूँ। Yes, it's me, Maya. You said come back tomorrow. I'm here. तो फिर से अगले दिन खटखटाहट आएगी कि मैं हूँ माया, आपने कहा था कल आना, तो मैं आ गई। I said tomorrow. It's still today. हमें कहना है, मैंने कहा था कल आना, लेकिन आज है तो आज है ना, तो कल आना। So when Maya comes, if you tell her no, she won't listen. But if you tell her later, it's a good way to keep her away. तो माया के यदि आप कहेंगे नहीं नहीं तो वो नहीं सुनेगी, लेकिन आप उसको टाल देंगे कल पे, तो फिर ये उससे दूर रहने का अच्छा तरीका है। So we have the example here of King Hayati. He went to the limit. तो हमारे यहाँ राजा हयाती का उदाहरण है, मतलब भोग की उन्होंने एक सीमा पार की। And he couldn't even enjoy as a human being, so he became a goat. और वे एक मनुष्य की तरह भोग नहीं कर पा रहे थे, तो वो एक बकरा बन के भोग करने का प्रयास किया। Because animals have more proclivities, more tendencies, more abilities for sex life. क्योंकि पशुओं की रुचि या उनकी प्रवृत्ति या उनकी योग्यता ज्यादा होती है और जीवन के लिए। Prabhupada tells one story प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं about one man. He was a leper. एक व्यक्ति था, उसे कोढ़ रोग था। And there was one very nice prostitute in town, and he wanted to enjoy with the prostitute. और उस शहर में एक वेश्या रहती थी और उसके साथ वो भोग करना चाहता था। Now he was married. He had a very nice wife also. और उस जो कोढ़ी व्यक्ति था, उसकी पत्नी भी थी। But he didn't have enough money because the prostitute was very expensive. लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वो उस वेश्या के साथ भोग कर सके। So his wife could understand his desire. लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी इच्छाओं को समझ लिया। So she was thinking, I should go to the prostitute and do some seva for the prostitute. Maybe she'll accept my husband. तो पत्नी ने सोचा कि मैं वेश्या के पास जाती हूँ और उसकी सेवा करती हूँ ताकि वे मेरे पति का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। So she went, she met the prostitute, and she did some seva for the prostitute. And she said, my husband, he wants to come and be with you. तो पत्नी गई, वहाँ वेश्या के साथ रही और उसकी सेवा की, और बाद में उसने बताया कि मेरे जो पति हैं वो आपके साथ भोग करना चाहते हैं। Prostitute's thinking, such a nice wife. Why is he coming here? तो वेश्या ने सोचा कि इतनी अच्छी पत्नी उसके पास है, तो फिर वो यहाँ क्यों आना चाहते हैं? But she said, all right, send him. लेकिन उसने कहा कि ठीक है, उनको भेजिए। So he's all excited. He's तो going. वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित था He's going to the prostitute. वेश्या के पास जाने के Now लिए। she's very intelligent, क्योंकि वेश्या बहुत बुद्धिमान थी and she wants to do something to discourage him. और वो चाहती थी कि उस व्यक्ति को इस मार्ग से बचाने के लिए कुछ करे। So she cooks a nice feast. तो उसने बहुत अच्छा एक भोज बनाया। And when he comes, she serves the feast in 3 different kinds of plates. और जब वो कुष्ठ रोगी आता है तो वेश्या उसको 3 अलग-अलग प्लेटों में भोजन परोसती है। She serves the same preparations in a leaf plate, in a silver plate, and in a golden plate. एक ही प्रकार का खाना एक पत्ते की प्लेट में, चांदी की प्लेट में और सोने की प्लेट में परोसती है। So this leper, he's looking, he's saying, she's serving the same preparations in 3 different plates. तो वो जो कोढ़ी है वो सोचता है कि अरे खाना तो एक ही है, लेकिन 3 प्लेटों में क्यों परोसा जा रहा है? So he has to ask, तो उसके बारे में पूछता है, why are you giving me the same food in 3 different plates? क्यों मुझे एक ही खाना दे रही हो और 3 अलग-अलग प्लेटों में? She looks at him and says, you have a nice wife, go home, it's all the same. तो वो बोले कि तुम्हारे पास एक अच्छी बीवी है, तो तुम घर वापस जाओ, ये सब एक ही है। It's all the same. खाना
कवरिंग अलग अलग है, खाना एक ही। Yeah, so that's the illusion of sex life. तो यौन जीवन का ये मोह है। And Prabhupada used to say, people think, oh, I have a nice soft bed and I have a nice beautiful arrangement for sex life, and the dog is doing it in the street, I'm better than the dog. तो भाई बताते थे कि लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छा दारू बिस्तर है और इतने सारे आयोजन हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, और बाहर एक कुत्ता जो है वो तो सड़क पे ही इन कार्यों में लगता है, तो मैं कुत्ते से अच्छा हूँ। Pleasure is the same. लेकिन वास्तव में कोई अंतर नहीं, No different. कोई अंतर नहीं। Prabhupada illustrated that using a different example one time. प्रभुपाद ने एक बार एक अलग उदाहरण दिया इसको समझाने के लिए। I was personally there with Prabhupada for this one. This was interesting. This was in New York back in 1975. Yeah. 1975 में न्यूयॉर्क में ये बात हुई और उस समय मैं व्यक्तिगत रूप से श्रील प्रभुपाद के साथ था। So we were on a morning walk with Srila Prabhupada. तो मॉर्निंग वॉक हम कर रहे थे श्रील प्रभुपाद के We साथ। were walking through Central Park in New York. न्यूयॉर्क में जो पार्क है वहाँ से हम It's a very big park, and there's also cars that drive through the park. There are roadways in the park. बहुत ही बड़ा एक गार्डन है, वहाँ पे रास्ते बने हुए हैं, कारें भी वहाँ पे चलती हैं। So the cars are going by. तो कारें वहाँ से जा रही थी। Very good. Perfect translation. आदर्श अनुवाद। And so Prabhupada stopped the morning walk. He turned around, he looked at all the devotees and started to speak. तो प्रभुपाद ने प्रातःकालीन भ्रमण बंद कर दिया, उन्होंने कारों की ओर देखा और भक्तों से बात करने लगे। He said, the man is running on 4 wheels and the dog is running on 4 legs. What's the difference? प्रभुपाद जी ने बोला कि आदमी दौड़ रहा है 4 पहियों की गाड़ी पे और कुत्ता दौड़ रहा है 4 पैरों पे। He asked us, what's the difference? उन्होंने हमसे पूछा अंतर क्या है? Nobody could say anything. कोई भी कुछ उत्तर न दे पाया। And Prabhupada said, no difference. और प्रभुपाद ने कहा कोई अंतर नहीं। The man is running for sense gratification, the dog is running for sense gratification, the business is the same. प्रभुपाद जी ने कहा आदमी दौड़ रहा है इंद्रिय तृप्ति के लिए, कुत्ता भी उसी के दौड़ रहा है, तो इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं। So this material world, sense gratification, as it says in the Bhagavad Gita, is simply a source of suffering, that's all. तो इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के बारे में भगवद्गीता में कहा है कि ये केवल कष्ट का ही एक स्रोत है। Sometimes devotees say, well, Krishna consciousness is sense gratification too. कई भक्त लोग बोलते हैं कृष्ण भावना भी तो इंद्रिय तृप्ति ही है ना। Yeah, but that is called sense satisfaction, not gratification. हाँ, लेकिन उसे कहा जाता है इंद्रिय संतुष्टि, न कि इंद्रिय तृप्ति। It's satisfying the soul. यह आत्मा को संतुष्ट करता है। And the mind and the senses also become satisfied when the soul is satisfied. और जब आत्मा संतुष्ट है तो मन और इंद्रियां भी अपने आप संतुष्ट हो जाती हैं। But that is not sense gratification, that is devotion. That is actually the nature of the soul's relationship with the Supreme. तो इंद्रिय तृप्ति नहीं है, वो वास्तव में भक्ति है, जो कि आत्मा का नित्य संबंध है भगवान के साथ। So Maya will make you think that there's some happiness out there. माया आपको ये बार-बार सोचने मजबूर करेगी कि कृष्ण को सुख मिल जाएगा आपको। She has so many plans. बहुत सारी योजनाएं हैं माया के पास। And if she sees you very austere, performing austerities and making nice advancement, she'll come up with some really difficult attractions. जब माया देखेगी आप बहुत तपस्वी हैं, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आपके सामने बहुत ही कठिन आकर्षण प्रस्तुत करेगी। She'll bring your old girlfriend back to have you haven't seen for 30 years. वो आपके सामने पुरानी गर्लफ्रेंड को ले आएगी जिसको आपने 30 साल से देखा ही नहीं। Your old boyfriend. या फिर बॉयफ्रेंड। Yeah, it happens. Indra gets jealous that this bhakta here is making so much progress. He's going to take my kingdom.
तो इंद्र जो है ईर्ष्यालु हो जाता है जब देखते हैं कि कोई बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा है तो वो मेरा राज्य हड़प करने आके सके इंद्र न बन जाए. It's like when Vishwamitra Muni was doing all great austerities, Indra became disturbed, so he sent Menaka. जैसे विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे थे तो इंद्र उससे परेशान हो गए और इंद्र ने तपस्या बंद करने के लिए मेनका को भेज दिया To break his austerity. ताकि उनकी तपस्या बंद हो जाए. And he was successful. वो सफल भी हो गए. And then, of course, Vishwamitra Muni fell down, got married to Menaka, and then they had a child, which was the famous Sakuntala. That's a famous story in India, the life of Sakuntala. That was the daughter of Vishwamitra Muni and Menaka. तो हम जानते हैं कि मेनका और विश्वामित्र मुनि के संपर्क से शकुंतला का जन्म हुआ जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कथा भी है शकुंतला की तो भारत में तो वो है विश्वामित्र की पुत्री थी. So Vishwamitra Muni thought, now I'm just a useless householder. I fell down. I'm getting out. I'm going to go back to my austerities. And if Indra tries it again, I have a plan. तो विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि मैं बेकार ही इसमें फंस गया और मेरा पतन हो गया. मैं फिर से जाता हूँ फिर से तपस्या करूँगा क्योंकि मेरी योजना तो अलग है. I mean, Vishwamitra Muni used to sit in ice cold water in the wintertime up to his neck and meditate. मतलब इतनी कठोर तपस्या करते थे कि बर्फ की तरह इतना ठंडे पानी में गर्दन तक ठंड के समय तपस्या करते थे. In the summertime, he would sit with 7 fires all around. He'd sit in the middle of the hot sun. गर्मी के समय में 7 तरफ से अग्नि जला के उसके बीच में बैठते थे. Tremendous austerities. इतनी कठिन तपस्या. But, as soon as Menaka come, he was finished. लेकिन जैसे ही मेनका आई तो उनका तपस्या. So after he fell down, he was thinking, not this second time. तो उनका जो है पतन हो गया. So Indra saw, Indra think, he's trying again. उन्होंने सोचा कि अब दोबारा ये गलती नहीं करनी है. ऐसा सोचा कि फिर से प्रयास करें. He sent another society girl, her name was Ramba. तो फिर एक दूसरी को भेजा गया जिसका नाम था रंभा. These girls are very beautiful, and they dance in the heavenly planets as entertainers. ये वक्ताएं बहुत सुंदर होती हैं और ये नृत्य करती हैं स्वर्ग में. So she came, तो रंभा आई. but this time he got angry, तो इस बार लेकिन विश्वामित्र में गुस्सा हो गया. and he had performed the yoga process so perfectly that he shot fire out of his eyes, and she was a burnt pakora. तो उन्होंने तुरंत तपस्या इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपनी आंखें खोली, आंखों से अग्नि निकली और वो जल के पकोड़ा हो गई. Not edible. लेकिन वो खाने योग्य नहीं. So, and as soon as he did that, again, he fell down. जैसे ही उन्होंने अपने क्रोध का इस तरह प्रयोग किया तो फिर से उनका पतन हो गया. So attraction to Maya and aversion to Maya is both attraction to Maya. तो माया से राग या माया से द्वेष वो दोनों ही जो हैं वो गलत मतलब हमारे लिए कष्ट है. This sex desire, what is it? What is that energy? ये यौन इच्छा है ये क्या है कौन सी शक्ति है. It's the actual nature of the soul's love for Krishna, which has been diverted away from Krishna towards the material energy. ये आत्मा का वास्तविक प्रेम है, प्रेम का स्वभाव है कृष्ण के प्रति. लेकिन जब भौतिक जगत में ये प्रतिवर्तित होता है तो ये काम के रूप में आता है. So nobody by their own power can be free from the effects of the illusionary energy, especially the attraction to the opposite sex. It's not possible by one's own efforts. तो कोई भी अपनी शक्ति से इस जो ब्राह्मण शक्ति है उसके प्रभाव से बच नहीं सकता है. विशेष रूप से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण से अपनी शक्ति से बच पाना असंभव है. Only by becoming attracted to Krishna, one can give up the attraction to Maya. केवल तब जब हम कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं तब माया के प्रति आकर्षण को त्याग सकते हैं. It says if you meditate on Krishna's eyebrows, then one can destroy all desires for sex life.
सर कहा जाता है कि यदि कृष्ण की बाहों पे हम चिंतन करते हैं तो यौन की सारी इच्छाओं को नष्ट कर सकते हैं. Yeah, even Maya tried to attract Krishna. माया भी जो है कृष्ण को आकर्षित करने का प्रयास करती है. Yeah, they Narayan Rish. He sent that, what was her name? Urmila, to come and attract Narayan Rish. जैसे नारायण ऋषि को आकर्षित करने के लिए अप्सरा को भेजा गया था. And she was the best. और वो जो अप्सरा थी सबसे बेस्ट थी. But as soon as she came, Narayan Rish, they created all of these other beautiful girls coming from their bodies. लेकिन जैसे ही वो नारायण ऋषि के पास गई तो उन्होंने अपने शरीर से उससे भी अधिक सुंदर कई युवतियों को प्रकट कर दिया. No, she couldn't do anything. और वो अप्सरा कुछ भी कर नहीं पाई. So if you take shelter of Krishna only, there's only one way you can be free from the attraction of this material world, is you have to develop your love for Krishna. तो यदि आप केवल कृष्ण की ही शरण लेते हैं एक ही तरीका है इससे हम इस भौतिक जगत के आकर्षण से मुक्त हो सकते हैं. And how do you develop love for Krishna? और वो कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे आप विकसित कर पाएंगे? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Read Srimad Bhagavatam श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए and take Krishna Prasad. और कृष्ण प्रसाद का आस्वादन कीजिए. And if you do this all the time, not just sometimes, और यदि आप हमेशा ऐसा करते रहेंगे, ऐसा नहीं कभी-कभी. it's me, Maya. I'm busy. Sorry, go away. जब इस तरह माया आएगी, हम कह सकते हैं मैं भी व्यस्त हूँ, कृपया आप चले जाइए. Prabhupada tells a story. I mean, there's a story about the life of Prabhupada. प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं, मतलब प्रभुपाद के जीवन से ही एक कहानी है. So Prabhupada was in Delhi. He was giving a lecture to these important people in Delhi. They were just government ministers and other people from the government. प्रभुपाद एक बार दिल्ली में थे और कुछ महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों को प्रवचन दे रहे थे. So many of the Western disciples were also there with Prabhupada. तो कुछ विदेशी शिष्य भी प्रभुपाद जी के साथ में थे. So Prabhupada gave a very powerful talk. प्रभुपाद ने बहुत ही अद्भुत प्रवचन दिया. And he was finished, and then one of the ministers, he came up and he full dandavats at Prabhupada's feet, just like a humble, brahmachari. तो एक मंत्री आया और एकदम प्रभुपाद जी को पूरी तरह दंडवत प्रणाम कर दिया जैसे एक नम्र ब्रह्मचारी हो. And the devotees were shocked. और भक्त सब आश्चर्य में पड़ गए. Wow, such an important person. He's so humble. अरे कितना महत्वपूर्ण आदमी है और कितना विनम्र है. So they came to Prabhupada after. Prabhupada, what is it about you that attracts people like that? तो एक भक्त के बाद प्रभुपाद होता है, प्रभुपाद जी आपके अंदर ऐसा क्या है कि लोग आपसे इतना आकर्षित हो जाते हैं? Prabhupada said, I have no lust. प्रभुपाद ने कहा मेरे अंदर काम वासना बिल्कुल ही नहीं. And he walked away. प्रभुपाद जी आगे बढ़ गए. He got in his car, and a few devotees came in the car, and they started driving back to Prabhupada's place. प्रभुपाद जी कार में बैठे, कुछ भक्त भी आके बैठे और फिर वापस अपने स्थान की ओर चल The devotees were thinking, boy, Prabhupada has no lust. We have so much lust, So Prabhupada could understand what they were thinking. So when they got to Prabhupada's place, Prabhupada got out of the car, he turned around, he looked back at the devotees, he said, it's not because I have no lust, it's because I have no time. प्रभुपाद जी भक्तों की भावना समझ गए तो क्या सोच रहे हैं. प्रभुपाद ने जब वहां पहुंचे कार से उतरे भक्तों की ओर देखा बोले ऐसा इसलिए नहीं कि मेरे अंदर काम वासना है नहीं, वास्तव में मेरे पास कोई समय नहीं है. Maya, I'm here, no time, sorry, come back. माया आती है, मैं आई हूँ, तो हम कहते हैं कोई समय नहीं. So if we stay busy in Krishna consciousness, then even if Maya comes, we have no time. यदि आप कृष्ण भावनामृत में व्यस्त रहते हैं, यदि माया का आगमन होता भी है तो इसके लिए हमारे पास कोई समय नहीं. As soon as you take some time off, Maya will invite you for vacation.
जैसे ही आपके पास समय आएगा तो माया जो है अपने आमंत्रण पेश करेगी। And this is how we develop our attraction for Krishna. Stay busy in Krishna consciousness. No time for anything but Krishna. तो यदि हम कृष्ण की सेवा में व्यस्त रहेंगे तो कृष्ण के प्रति आकर्षण हमारा आता जाएगा। But I have my family. I have my friends. I have my job. I have my hobby. I need to do time for those things. मेरा परिवार, मेरी जॉब, मेरे मित्र, मुझे उनके लिए समय चाहिए। Just remember Krishna. केवल कृष्ण का स्मरण कीजिए। And do whatever you do as a service to Krishna. और जो भी आप कर रहे हैं उसे कृष्ण की सेवा के रूप में करते रहिए। Even our ordinary material activities that we have responsibilities with, do it as a service to the Lord. यहाँ तक कि हमारे जो भौतिक कार्य हैं या भौतिक जिम्मेदारियां हैं उनको भी भगवान की सेवा के रूप में संपन्न कीजिए। What is that verse from the Bhagavad Gita? 9:27. Huh? Yat karosi aranasi, yat jahosi dadasi, yat tapasi tu konte, yat kurushu mararpana. All that you do, all that you eat, all that you offer and sacrifice, all the things that you give away, Krishna says, do it for me. Do it as a service to me. भगवान बहुत बताते हैं कि जो भी आप करते हैं या दान देते हैं, अर्पण करते हैं, वे सब मेरी सेवा के रूप में संपन्न कीजिए। So this verse is mostly for people who have responsibilities outside. तो ये श्लोक विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें बाहर बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं। In other words, the grihastas. मतलब गृहस्थों के लिए। But for the brahmacharis, they have no time. ब्रह्मचारी के लिए कोई टाइम नहीं है उनके पास। When I was a brahmachari, the mantra was, work hard now, enjoy later. जब मैं ब्रह्मचारी था तो हमारा मंत्र था अभी कठिन परिश्रम करो, बाद में आनंद लेंगे। But there was no later. बाद कभी आता ही नहीं। So every time we wanted to talk about later, it was still now. तो जब बाद की बात करेंगे तो कभी बाद आएगी नहीं। We were waiting for later, but it never came. बाद का इंतजार करते रहे लेकिन वो आए ही नहीं। So that was the idea. तो ये है विचार। And when we used to go to sleep at night, when you were going down to go to sleep, before you hit the pillow, you were asleep already. जब मैं रात को सोने जाता था, सोने के लिए जा रहे हैं, यहाँ तकिए से स्पर्श हो से उसके पहले नींद आ जाती। We were so tired. But it was good because we kept nicely engaged in Krishna consciousness. इतना हम थक जाते थे। ये अच्छा था क्योंकि हम कृष्ण भावना में अपने बहुत अच्छे से सेवा में युक्त थे। So even if you have nothing to do, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, we can do that forever. Just like Haridas Thakur. तो यदि करने के लिए कोई सेवा नहीं है तो हमारी कृष्ण महामंत्र